Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing great. I am Bani, your English facilitator at your favorite learning platform, Learn Forward by Feathercap. And today we'll be discussing the chapter, No Bird Can Fly Over It. So this chapter is basically a personal account on the life of Tenzing Norgay. This person was the first person to ever climb the mighty peak Mount Everest. So he was the first person with Sir Edmund Hillary to climb the Mount Everest. This is an account on the life of this person, Tenzing Norgay. Now he explains, it is basically an autobiography of how he became a mountain climber, a mountaineer, and what was he becoming before that, and basically how his journey went. So he was a Sherpa. Uh, these people, they belong to Tibet, and Sherpas are basically people who live on mountains and they climb mountains, and they are basically people who belong to Tibet, Nepal. So he was a Sherpa, and they basically belong to Mongolian culture or Tibet, but he was sent to become a monk. But an incident occurred, and he left that place real soon. He ran away from that place, and he then wanted to become a mountain climber. He was always leaned towards the fact that he wanted to go and see Mount Everest. And whenever he saw Mount Everest, he was very fascinated by the beauty of it. But one day it struck his mind that he has to go there and climb it, and he did it. So he was the first person. So this chapter also tells you that if you really set your mind to something, you will be able to achieve it no matter what. So if you want to do something, if you want to achieve something, just do not lose hope no matter how many times you fail. Just do it. And he was the 11th of the 13 children his parents had, and a lot of children were left because of some condition. Death was always very close to them. So only this Tenzing Norgay, one male child, and three sisters of Tenzing Norgay were left. Now let us read this chapter to know how he went from being a monk to becoming the world's first person to climb Mount Everest, the highest peak. So do you know what is the height of Mount Everest? Can anybody tell me? I want you all to answer in the comments. In one, two, three, 4, and 5. Okay, so it is, sorry, it is 8848 meter. Yes. So Tenzing was a Sherpa. Without Sherpas, mountain climbing in the Himalayas would be an impossible mission. So जो टेंजिंग था ना, ये जो बंदा था, ही वॉज अ शर्पा. शर्पास कौन होते हैं? मैंने अभी बताया, जो हिमालयास पे, माउंटेन पीक्स पे रहते हैं, जो बेसिकली माउंटेन क्लाइंबिंग में पार्ट लेते हैं. ये तिब्बत के लोग होते हैं, नेपाल के लोग होते हैं. Literally, Sherpa means man from the east. What does Sherpa mean? Man from the east, man who belongs to the Tibetan culture. We are of Mongolian origin, and long ago our ancestors migrated from Tibet. तो ये लोग मंगोलियन कल्चर वाले लोग थे, एंड इनके जो एंसेस्टर्स थे वो तिब्बत से आए थे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस टू यू बिफोर. वी आर स्टिल मोर लाइक तिब्बतन्स. ये लोग अभी भी तिब्बतन्स की तरह ही हैं. एज अ लैंग्वेज इज सिमिलर, एंड सो आर आर क्लोथिंग एंड फूड एंड मेनी कस्टम्स. अभी भी इनके जो वे ऑफ लिविंग है, इनका, इनकी लैंग्वेज, इनका फूड, सब कुछ तिब्बतन से ही मैच होता है. बट दे हैव जस्ट माइग्रेटेड हियर. One of the closest bonds is that of religion. For like the Tibets, we are Buddhist. And जो closest bond है ना इनका with Tibetans, दैट इज ऑफ रिलीजन, कि ये लोग भी बुद्धिस्ट हैं. मतलब जैसे मॉन्क्स वगैरह होते हैं ना, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं ये लोग. आवर होम इज हार्श एंड स्टोनी, द वेदर इज बिटर, बट स्टिल वी हैव बोथ एग्रीकल्चर एंड पैस्टरेज. और जो हमारा घर है वो बहुत ज़्यादा स्टोनी और बहुत हार्ड टाइप का घर है. जो वेदर है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत अनबेरेबल ठंड होती है, बट स्टिल हमारे पास एग्रीकल्चर भी है और लाइफ स्टॉक भी है. पैस्टरेज क्या होता है? लाइफ स्टॉक भी है. अपार्ट फ्रॉम व्हीट, पोटेटोज आर आर बिगेस्ट क्रॉप, एंड व्हीट के अलावा पोटेटोज हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेन क्रॉप है. एंड आर स्टेपल फूड. तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेपल फूड क्या है?
potatoes apart from wheat. ठीक है. Now, besides, people keep herds which consist of sheep, goats and yaks. और यहाँ पे ना लोग a form of living is to keep livestock. और livestock में आते हैं sheep, goats and yaks. और जो yaks है ना यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा फेमस है बिकॉज उनसे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं. एक तो उनसे वुलन क्लोथ प्रोवाइड हो जाता है बिकॉज उनके ऊपर इतनी ज़्यादा वुल की लेयर होती है मोटी. ठीक है. उनसे दूध प्रोवाइड हो जाता है, उनसे कपड़े तो प्रोवाइड होते ही होते हैं, उनसे मीट भी प्रोवाइड हो जाता है. तो दे प्रोवाइड एवरी सॉर्ट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ दैट दे कैन गिव, मतलब जो भी खाने के लिए, जो भी लिविंग के लिए नीड होती है ना चीज की, वो सब कुछ याक प्रोवाइड कर देते हैं. तो सबसे ज्यादा जो मेन यहाँ पर लाइफ स्टॉक है वो याक होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर yaks for the Sherpas. The yak is a great staple of life. From them we get wool for clothing, leather for shoes, dung for fuel, milk, butter and cheese for food, and also sometimes meat. तो क्या क्या मिलता है? वुल मिलता है क्लोथिंग के लिए, लेदर मिलता है शूज के लिए, डंक मिलता है फ्यूल के लिए, और क्या क्या मिलता है? मीट भी मिलता है, और बटर मिलता है, चीज मिलता है, घी मिलता है. सारी चीजें मिलती हैं जो एक नॉर्मल इंसान को लाइफ जीने के लिए चाहिए होती हैं. फ्रॉम इट अ मैन कैन गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही नीड्स टू नरिश हिम एंड कीप हिम वार्म. सब कुछ मिलता है. माय फैमिली लिव्ड इन थामे. उसकी फैमिली कहाँ रहती थी? टेंजिंग नॉर्गे की फैमिली कहाँ रहती थी? थामे में. एंड आई ग्रो अप देयर, बट आई वाज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड साचू. ये जो टी ऐसे होता है ना, जब ये कुछ ऐसे होता है तो इसमें हम जो टी होता है, दिस इज ऑलवेज साइलेंट, सो इट इज नोन एज साचू. कहाँ रहते थे? साचू में. विच मीन्स हॉट स्प्रिंग्स. क्या कहते हैं इसे? हॉट स्प्रिंग्स मतलब होता है. एंड इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज मतलब जहाँ पर कोई भी कोई पूजा करने के लिए आता है, कोई भी ऐसी जगह जिसको बहुत ज्यादा होली माना जाता है. पिलग्रिमेज का मतलब होता है जर्नी मेड, मतलब कोई सेक्रेट जगह. ठीक है. तो उसकी जो जो साचू था, जो हॉट स्प्रिंग्स वाली जगह थी जहाँ पर वो रहता था, जहाँ पे वो पैदा हुआ था, वो एक सेक्रेट प्लेस थी, एक होली प्लेस थी. डिसाइडिंग व्हेन आई वाज बोर्न इज नॉट एज इजी एज वेयर. मुझे पता है कि मैं कहाँ रहता था, कहाँ से, मतलब कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पे अब रहता हूँ, बट मुझे ये नहीं पता, ये डिसाइड करना बहुत टफ है कि मैं कब पैदा हुआ था. अब ये, यार हर बंदे को अपने बर्थडे की डेट तो पता ही होती है ना, पता होता है कि वो किस मंथ में पैदा हुआ था, किस ईयर में पैदा हुआ था. बट फॉर टेंजिंग नॉर्गे इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हेन ही वाज बोर्न rather than where he used to live. In Solo Khumbu, time is kept by Tibetan calendar. तो जहाँ वो रहता था ना, खुम्बू में, वहां पर जो टाइम था वो तिब्बतन कैलेंडर के हिसाब से मतलब नापा जाता था. और यहाँ पे नंबर्स नहीं होते. यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं होता. यहाँ पे नेम्स होते हैं लाइक द ईयर ऑफ द हॉर्स, द टाइगर, द ऑक्स, द वर्ड एंड द सर्पेंट. तो ऐसे ईयर्स हर एक मंथ को ना हर एक एनिमल के नाम के आगे डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे द ऑक्स, द टाइगर, द हेयर, द सर्पेंट, ऐसे करके हर एक मंथ को एक एनिमल के नाम से डिवाइड करा जाता है. 12 एनिमल्स हैं या इस मतलब ये जो तिब्बतन कैलेंडर है उसमें 12 एनिमल्स के नाम से हर एक मंथ को डिवाइड करा गया है. एंड जब एक ईयर कंप्लीट होता है तो वो सेम नेक्स्ट ईयर में सेम वही मंथ, जैसे जनवरी में फॉर एग्जांपल द ऑक्स है तो जनवरी को ऑक्स बोला जाएगा. तो ऐसे there are 12 of them altogether, all named after animals, of which 6 are male, 6 female. जो 6 महीने हैं वो 6 मेल एनिमल से मतलब के ऊपर नेम्ड है, और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है वो 6 फीमेल एनिमल्स के ऊपर नेम्ड है. एंड व्हेन दे हैव पास द साइकिल बिगिंस ओवर अगेन. और जब एक साल हो जाता है तो फिर से सेम मंथ्स आते हैं. जनवरी फरवरी नहीं होता है, एनिमल्स के नाम से है, याद रखना. I had been born in the year of the hare. तो अब उसको पता लगता है कि he had been born in the year of the hare. But recently I've been able to figure out that this must have been the year 1914. When was he born? Answer is, ये question है, the year 1914. ठीक है. 1914 में पैदा हुआ था वो. So
The season of the year in which I was born was in the later part of May. तो वो later part of May में पैदा हुआ था. This has always seemed a good sign to me, for the end of May has always been an important time throughout my life. So the month of May has always been an auspicious time in throughout his life. So he believes that when he was born was a very special and auspicious and good timing. The time of birth, the time of great expeditions. और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है. एक्सपेडिशंस होता है एक जर्नी, मतलब जब आप कहीं घूमने जाते हो उसको एक्सपेडिशन कहते हैं. एक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस जर्नी, एडवेंचर का टाइम है. एंड बेस्ट माउंटेन वेदर, और मई में जो माउंटेन वेदर होता है वो भी बेस्ट होता है. इट वॉज ऑन 20th May that I almost climbed to the top of the Everest with Lambert, and on 29th, a year and a day later, that I reached the peak with Hillary. तो जब सबसे पहले वो पहुंचा था एवरेस्ट पे, वो 28th May को था. तो he always believes that May is a very auspicious month, a very holy month for him, क्योंकि वो 28th May को पहुंचा था एवरेस्ट में, एंड 29th May सेम एक साल बाद वो पहुंचा था पीक पे हिलरी के साथ, एडमंड हिलरी के साथ. माई मदर्स नेम इज किन्जोम. उसकी मम्मी का नाम है किन्जोम. आपको याद रखना है कि उनकी टेंजिंग नॉर्गे की मम्मी पापा का नाम क्या है. सो उनकी मदर का नाम है किन्जोम. माई फादर्स नेम वॉज घंगला मिंगमा. You have to remember it. Kinzom and Ghangla Mingma. My parents had 13 children. मैंने बताया था 7 sons and 6 daughters, and I was the 11th. But life was hard and death always close. And from all of us, only myself and 3 of my sisters are still living. So I told you beforehand that there were 13 children, and he was the 11th son. There were 7 sons, and the remaining were daughters. But now only he was left amongst all the 7 sons, and only 3 daughters were left. All the others, they died. Until very recently, I was the only one of the family to visit the outside world. So he was the only one amongst his family to, go out and live in the world, because all the others, they were living in their hometown only. They did not get the chance to go out and explore the world as he did. After the climbing of Everest, 2 of my surviving sisters shifted to Darjeeling with their families. And now the sisters, 2 of his sisters, they were married, so they shifted to Darjeeling with their families. And just this year, my mother too, though now 84 years old, left her home in Thane for India. And his mother was 84 years old, but she left her home from Tibet and she went to India. She left her home from Thane and she went to India. Now, for the first time since I was a boy, almost the whole living family is reunited in one place, and this makes me very happy. And this, for the very first time, the whole living family, the family that is still left of Tenzing Norge was reunited, and this made him very happy. My parents called me Namgyal Wangdi. So his name was Namgyal Wangdi. But there was a head monk. उनका नाम था लामा. तो जो लामा थे ना, वो बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेड मॉन्क थे. तो उन्होंने कहा था कि ये जो तिब्बतन कल्चर के हिसाब से आप इनका नाम रखो टेंजिंग नॉर्गे. सो फ्रॉम नामग्याल वांगड़ी उसका नाम शिफ्ट कर दिया था टेंजिंग नॉर्गे में. बट एट द सजेशन ऑफ अ लामा, आई वॉज रीनेम्ड टेंजिंग नॉर्गे, एंड द रीजन वॉज दैट ही प्रेडिक्टेड ग्रेट थिंग्स फॉर मी. तो उन्होंने इस बंदे के लिए बहुत ज्यादा ग्रेट थिंग्स प्रिडिक्ट करी थी, इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया था. नॉर्गे मीन्स वेल्दी और फॉर्चुनेट, एंड नॉर्गे का मतलब होता है वेल्दी या फॉर्चुनेट. एंड ही इंडीड बिकेम वेरी वेल्दी एंड फॉर्चुनेट बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन टू क्लाइंब द पीक माउंट एवरेस्ट. टेंजिंग मीन्स सपोर्टर ऑफ रिलीजन, और टेंजिंग का मतलब होता है सपोर्टर ऑफ रिलीजन. सो सपोर्टर ऑफ रिलीजन हु इज हेल्दी एंड हु इज वेल्दी एंड फॉर्चुनेट. When I was a little older, it was decided that I myself was to be a lama. So my family had already decided for me. They had decided my fortune that I was to be a lama. I was to be a monk. I was sent to a monastery. Monastery वो जगह होती है जहाँ पर सारे monks रहते हैं. My head was shaved and I put on a robe of a novice. और मेरे सिर को शेव कर दिया था, एंड मैंने एक फ्रेशर, नॉविस होता है एक फ्रेशर वाली रोब पहन ली थी. बट वंस वन ऑफ द लामास गॉट एंग्री विद मी एंड हिट मी ऑन द बेयर हेड विद अ वुडन
boat and I ran home never to return. और एक बार क्या हुआ, एक कोई मॉन्क गुस्सा हो गया मेरे पे एंड उन्होंने वुडन स्टिक से मेरे सिर पे बहुत तेज मारा और मुझे इतनी तेज लगी कि मैं भाग गया वहां से एंड आई डिसाइडेड दैट आई वुड नेवर रिटर्न टू द सेम प्लेस एंड आई वुड नेवर बी अ लामा अगेन, आई वुड नेवर बी अ मॉन्क अगेन. समटाइम्स व्हेन आई टेल दिस स्टोरी, और जब मैं अपने फ्रेंड्स को स्टोरी बताता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तेरे को सिर पे चोट लगी थी कि तू भाग के आ गया था और तब से ही तेरे को ये माउंटेन क्लाइंबिंग की वो तेरे को तेरा पैशन वहीं से जगा था, किसी ने तेरे सिर पे मारा था तभी तू ये जाके माउंट एवरेस्ट चढ़ के आया है. ओ सो इट वाज अ whack on the head that made you crazy about mountains. मतलब तेरे सिर पे चोट ही लगी थी उस टाइम पे. Many times as a child, I saw the Everest rising high in the sky to the north. और बहुत बार जब मैं छोटा था तब मैं एवरेस्ट को देखता था कि वो नॉर्थ की तरफ ऊपर शाइन कर रहा है स्काई में. बट इट वॉज नॉट एवरेस्ट देन. उस टाइम पे उसका नाम एवरेस्ट नहीं था, इट वॉज चोमोलुंगमा. तो उस टाइम पे माउंट एवरेस्ट का नाम था चोमोलुंगमा विच मीन्स गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड. क्या नाम है? चोमोलुंगमा विच मीन्स गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड, और एट टाइम्स गॉडेस मदर ऑफ द विंड. But for me, it was the mountain so high, no bird can fly over it. So now you know what the title of this chapter means and how can you relate the title of the chapter to the story. तो जब Tenzing Norgay छोटा था, so he saw Everest as something that he could only dream of climbing. तो वो इतना बड़ा था, उसकी हाइट ही इतनी ज्यादा है, तो कोई भी इंसान उससे चढ़ना क्या सोच नहीं सकता था एक टाइम पे. So he always used to say that Everest is a peak that no bird can fly over it. So that is where the title of the story comes from. In 1921, 1922 and 1924, there were the first three famous Everest expeditions and many Sherpas went. तो जो Sherpas थे वो basically mountain climbers ही होते थे, तो वो सब गए फ्रॉम सोलो कुंबू जहाँ पे वो रहता था और दार्जिलिंग से भी. दे केम बैक विद मेनी स्टोरीज अबाउट द माउंटेनियर्स एंड द स्ट्रेंज क्लोज एंड बूस्ट. और बहुत सारे जितने भी गए थे वो सब लोग आए एंड उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेंज स्ट्रेंज स्टोरी सुनाई अबाउट दी माउंटेनियर्स. जो लोग गए थे ना, जो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गए थे, उनके बूट्स के बारे में, उनकी क्रेजी क्लोथिंग के बारे में. आई वॉज सो फैसिनेटेड that one day I paid money to use a pair of mountaineering boots, but they were so big and heavy that I could not walk at all. और एक बार क्या हुआ कि मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, इतना फैसिनेट हो गया था वो स्टोरी से कि मैंने ना एक बार पैसे दिए कि मैं ये वाले माउंटेनियरिंग बूट्स यूज करके देखूंगा, उनसे माउंटेन क्लाइंबिंग करके देखूंगा. और वो इतने बड़े और हैवी थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया और मैं बिल्कुल गिर गया. सो आई थॉट कि दिस इज नॉट मेंट फॉर मी. They all talked about the Everest and that was the first I had heard of it. और सब लोग एवरेस्ट की बात करते थे और that was the very first time that I had heard of Everest. What is the Everest? I asked. It is the same as Chomolungma, they answered. Only we were on the other side of it. तो सब मुझे बताते थे कि एवरेस्ट वो चोमोलुंगमा ही है, बट हम लोग बस उसके दूसरे ऑपोजिट साइड पे हैं. Only we were on the other side of it in Tibet. मतलब हम इंडिया में नहीं थे, तिब्बत में थे. I wanted to go to, but I was too young. I helped my family to grow potatoes, maize and barley, and we grazed sheep and yaks. तो मुझे बहुत मन था कि मैं भी जाऊं और चढ़ूं माउंट एवरेस्ट, but I could not have such high aspirations. We were not very poor, but still we could not dream of having such big aspirations. और मैं अपनी फैमिली को पोटैटोज ग्रो करने में, मेज में, बार्ली में और शीप्स और याक्स को ग्रेज करने में हेल्प करने में सही था. इन द अर्ली डेज माय फैमिली वाज वेरी पुअर, बट दे सेड आई वाज अ लकी बेबी बिकॉज आफ्टर आई केम थिंग्स बिकेम बेटर. इनिशियली जब वो पैदा नहीं हुआ था उसकी फैमिली बहुत ज्यादा पुअर थी, बट व्हेन ही केम इनटू दिस वर्ल्ड the things they started becoming better for, smoother and better for his parents. We ate the simplest food, but there was always enough of it, and from the yaks, wool and hides we made clothing to keep us warm during the long cold winters. तो खाना उनके पास हमेशा पूरा होता था एंड जो याक्स और शीप से उनको वूल वगैरह मिलता था उससे वो क्लोथिंग बना लेते थे जिससे वो पूरे विंटर को चला पाए. Unlike other people of the East, we wore shoes, mostly felt and hide boots, and in all my life, I have hardly ever gone barefoot. And they were lucky because they used to wear boots and shoes, and they did not ever have to go out barefoot. तो वो कभी ही बहुत रेयर कभी गया होगा barefoot. So उसको हमेशा he was lucky enough to have shoes to wear. The world was so big, सोलो कुंभू was so small. तो सोलो कुंभू में रहता था
दुनिया तो बहुत बड़ी थी, उसकी एस्पिरेशंस भी बहुत बड़ी थी, पर जहाँ पर वो रहता था ना, वो जगह बहुत छोटी थी. So he felt that he was not made for such small things. He always felt that he was made for bigger things, and he had to achieve a lot of things that people could not even dream of. I wanted to explore. I was only 13 when I ran away to Kathmandu, and it took 2 weeks to get there. और उसको दुनिया एक्सप्लोर करनी थी, उसको जीना था, उसको दाल चावल नहीं खाने थे, उसको हर एक डिश को टेस्ट करना था. सो ही वांटेड टू एक्सप्लोर. तो वो सिर्फ 13 साल का था जब वो काठमांडू भाग गया था. और उसको 2 वीक लगे थे काठमांडू जाने में, बिकॉज उस टाइम पे उसको कोई उसके पास पॉश तो थी नहीं जिसपे वो गया होगा, या फिर उसके पास कोई अच्छी कार भी नहीं थी. बट ही हैड टू गो बेयर फुट, चढ़ के जाना होता है माउंटेन्स वगैरह. तो 2 वीक्स लगे थे उसको, 14 डेज लगे थे. इट वॉज द फर्स्ट सिटी आई हैड सीन, और काठमांडू पहली सिटी थी जो टेंजिंग नॉर्गे ने देखी थी. बट अबाउट 2 वीक्स आई वेंट अराउंड द सिटी, बट सून आई फेल्ट होमसिक. 2 वीक वो 14 दिन वहां पे रहा, उसको बहुत अच्छा लगा. ही फेल्ट वेरी प्राउड दैट ही एक्सप्लोर्ड द सिटी ऑन हिज ओन. बट 2 वीक के बाद ना ही स्टार्टेड फीलिंग होमसिक. होमसिक मतलब कि उसको अपने घर की याद आने लग गई. व्हेन आई मेट सम अदर पीपल फ्रॉम माय विलेज, तो काठमांडू में उसको अपने ही गांव के कुछ लोग मिले, एंड उसने सोचा कि मैं इनके साथ ही अब वापस अपने गांव चला जाता हूँ. By the time I got back, I had been gone 6 weeks, and my parents were so glad to see me again that they hugged me. मैं 6 वीक्स के लिए गया हुआ था, और मेरे पेरेंट्स मुझे देख के इतना शॉक और खुश हो गए थे कि उन्होंने पहले मुझे हक किया, एंड फिर बहुत तेज थप्पड़ मारा कि तू कहाँ चला गया था. कोई भी पेरेंट्स होंगे तो यही करेंगे ना. आई स्टेड एट होम फॉर 5 more years आफ्टर द इंसिडेंट. अब मैं भाग गया था तो उसके बाद मुझे घर तो रहना पड़ा. सो व्हेन आई वाज 18, तब तक मैं घर रहा, एंड एट 18, but I knew that I could not stay in Solo Khumbu forever. But I knew that I was not made for such a small town. I wanted to explore. I wanted to, do bigger things in life. So Solo Khumbu was not my destination. It would be a part of my journey, but it was never my destination. So I was not made to be a farmer or a herdsman. मैं एक farmer भी नहीं बनना चाहता था. This was not the occupation that I had to choose for myself. एंड मैं एक हर्ट्समैन भी नहीं बनना चाहता था, मतलब मैं शीप्स और याक्स को घुमाने वाला बंदा भी नहीं बनना चाहता था. लेट इन 1932 व्हेन आई वाज 18, आई लेफ्ट अगेन. और जब वो 18 साल का हुआ, वो फिर से निकल गया. दिस टाइम आई वाज नो इट वाज नॉट काठमांडू बट दार्जिलिंग. अब वो काठमांडू नहीं गया, बट वो दार्जिलिंग गया. दो वंस मोर आई सीम टू बी टर्निंग माई बैक ऑन चोमोलुंगमा, और अभी भी वो माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ रहा था. इट फेल्ट दैट आई वाज गोइंग टुवर्ड इट, जबकि वो चोमोलुंगमा से या फिर एवरेस्ट से दूर जा रहा था. बट उसको ऐसे लग रहा था दैट इज ड्रीम ऑफ यू नो getting to the peak of Chomolungma या फिर Everest was becoming a reality. Now the word had spread that there was to be another expedition in 1933, and I was determined to go with it if I could. तो अब उसने सोचा कि एक और एक्सपेडिशन थी 1933 में माउंट एवरेस्ट चढ़ने की. तो उसने डिसाइड किया था कि अब तो मैं जाऊंगा. एंड इंडीड ही बिकेम द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. सो I hope you all like the story of how Tenzing Norgay emerged from a basic farmer and a herdsman to a monk, and then finally the first person to climb the highest peak of the world, Mount Everest. Now let's come to the competency-based questionnaire. Which of the following words is correctly spelled? Is a monastery. Which of the following words is the synonym of unfeasible? Easy. Sorry. Impossible. Which part of the given sentence has an error? If the sentence is free from error, mark no error. For the Sherpas, the yak is a great staple of life. The yak was a great. Literary Sherpa means man from the east. We are of Mongolian origin, and long ago our ancestors migrated from Tibet. We are still more like Tibetans, as our language is similar, and so are our clothing and food and many customs. One of the closest bonds is that of religion, for like the Tibetans, we are Buddhists. Sherpa means a man from the west, east, or south. The answer is east. Sherpas are of dash origin, of Mongolian origin. Sherpas are more like Chinese. False. They're more like Buddhists. Which religion do Sherpas follow? Buddhism.
Now, my mother's name is Kinzom. My father's name was Khangla Mingma. My parents had 13 children, 7 sons and 6 daughters, and I was the 11th. But life was hard and death always flows. And from all of us, only myself and 3 of my sisters are still living. Tenzing was the dash child to his parents. First, last, or 11th? The answer is 11th. Who were Tenzing's parents? His mother's name was Kinzom and his father's name was Khangla Mingma. This is the answer. Tenzing's parents had 13 children. Life was easy for them. False. Life was not easy for them. Take the correct options. The main occupations of the Sherpas are fishing and gaming, agriculture and pasturage, or teaching and writing. Agriculture and pasturage. B. How many children did Tenzing's parents have? 11, 12, or 13? 13. Tenzing ran away to Kathmandu because he wanted to climb the Everest, find work there, or explore the world beyond his village. Explore the world beyond his village. How was Tenzing's family in the early days? Poor, rich, or very poor? Very poor. Tenzing left the home again when he was 18 years old. Tenzing's ancestor migrated from Tibet long ago. Tenzing's parents called him with the name Namgyal Wangdi. For the Sherpas, the dash is a great staple of life. The yak. Right? True for T for true and F for false statements. Chomo Lungma means the god of the world. False. The goddess of the world or the goddess of the wind. Tenzing Norgay was born in the year 1903. False. 1914. Sachu means hot springs. True. Tenzing was sent to a monastery to be a lama. True. Now, answer the following questions. Why is yak considered a great staple of life for Sherpas? The yak was considered a great staple of life for the Sherpas because it provides almost everything that a man needs for a basic living. It provides wool for clothing, leather for boots, dung for fuel, and butter, cheese, milk, and sometimes meat as well. Why was it difficult to establish Tenzing's year of birth? Because in Solo Khumbu, the year of birth was not basically what we have right now, but it was always measured by an animal's name, like the ox, the serpent, the hare, etc. So he could not find out what year was he born in. Narrate the origin of Tenzing's Norgay's name. His parents named him Namgyal Wangdi, but a lama thought that his best name would be Tenzing Norgay because Tenzing means, let me just go back to it again. Yeah. So Tenzing means supporter of the religion and Norgay means wealthy and fortunate. And he actually emerged as wealthy and fortunate. Why does Tenzing consider the month of May important? Because it was on 28th May that he climbed Mount Everest, and it was on 29th May, an year after 28th May that year, that he climbed the peak of Everest with the Edmund Hillary. Also, it was the best month in which the peak of the mountains they shine bright. Why did Tenzing have such a fascination for the mountains? Because he used to live near them, and whenever he used to look at Chomo Mungla or the Everest, he always thought that no bird could fly over it. So he always loved and admired the mountains. Okay, so that was all. I hope that you liked the chapter, and I just want to say one thing, that if you aspire to be something, just do not shy away from doing that thing. Always try hard no matter how many times you fail, because one day you're going to achieve it.
I hope you loved the chapter. Thank you so much. Happy learning. Goodbye.